Hello people and welcome to Shifting Gears, and with me today I have the 2021 Honda CB350RS. अब ये मोटरसाइकिल Honda के H'ness CB350 पे बेस्ड है and here the term RS, the brand is saying it stands for road sailing. इस बाइक की कीमत है रुपीज 1.96 लाख ex-showroom. So let's check out what are the changes, what is different on this particular motorcycle over here, and is this going to be more exciting because your rider's triangle has changed and this bike is going to be a little bit more aggressive in your posture when you swing a leg. अब ये जो Honda CB350RS है, the company hasn't called it a scrambler or a cafe racer. They are saying that this is more of a modern classic roadster motorcycle. इस बाइक का जो राइडर्स ट्रायंगल है ये अब H'ness CB350 के कंपैरिजन में चेंज हो चुका है. सो यू विल फील दैट दिस इज स्लाइटली ऑन द स्पोर्टियर साइड वंस यू सिट ऑन द सैडल. आप देख सकते हो कि एक अपराइट राइडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है, बट द हैंडल बार रीच इज स्लाइटली मोर एग्रेसिव दैन द H'ness. आप थोड़ा आगे की तरफ झुक जाते हो. द फुट पैक पोजिशनिंग हैज़ चेंज्ड. यू गेट मोर रियर सेट फुट पैक्स. तो ब्रेक पेडल की प्लेसमेंट भी अभी अलग है कंपेयर टू द H'ness. एंड आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ अ पॉस्चर जब मैं कोई भी बाइक चलाता हूँ. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप नोटिस करोगे कि आपको सिर्फ एक टो गियर शिफ्टर दिया गया है. यू डू नॉट गेट अ हील एंड टो गियर शिफ्टर लाइक यू सी ऑन द H'ness CB350. सो दिस CB350RS is more or less similar to the H'ness CB350, but it is slightly on the sportier side. CB350RS के साथ आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएंट मिल जाता है. यू डू नॉट गेट ऑप्शंस लाइक यू सी ऑन दी H'ness CB350. ये जो मॉडल है इट इज़ बेस्ड ऑन दी DLX वर्जन ऑफ दी H'ness CB350 एंड नॉट दी DLX Pro. तो इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है. सामने से जब आप इस मोटरसाइकिल को देख लेते हो यू गेट दैट सेम फुल LED राउंड शेप्ड हेडलैम्प, लेकिन यहाँ पे हेडलैम्प के साथ आपको एक ब्लैक बेजल मिल रही है. सो दिस एड्स अ नाइस स्टेल्थ लुक, एड्स अ नाइस स्पोर्टी लुक. टर्न इंडिकेटर्स ऑन दिस मोटरसाइकिल आर ऑफ द LED टाइप. आपको फुल LED लाइटिंग ज़रूर मिल रही है, बट द टर्न इंडिकेटर इज डिफरेंट कंपेयर टू द H'ness CB350 एंड आई लाइक द वे दीज वंस लुक एज वेल. इस बाइक के टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन पे आपको फोर्क बूट्स भी दिए गए हैं. फ्रंट व्हील जो है इट इज़ अ 19 इंच सेटअप और इस पे आपको 7Y शेप्ड ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं. एंड यू हैव Nissan brake calipers along with a disc brake, and this bike obviously has dual channel ABS. इस बाइक के प्लास्टिक फ्रंट एंड रेयर मडगार्ड्स पे आपको ब्लैक स्मोक इफेक्ट मिल जाता है एंड दीज फेंडर्स आर लाइटर देन दैट ऑन दी H'ness CB350. इस बाइक पे आपको सिर्फ एक सिंगल टोन हॉर्न दिया गया है. यू डू नॉट गेट अ ड्यूअल टोन हॉर्न ऑप्शन. एंड अंडरनीथ द इंजन आपको एक बैश प्लेट मिल रही है which looks like it has been built quite well, but we will have to try it out ourselves. But you know what, we are not really going to bang the engine area over something. On the fuel tank you can notice you have the same Honda branding. इस रेड कलर ऑप्शन के साथ साथ आपको येलो एंड ब्लैक पेंट ऑप्शन भी मिल जाता है. दैट बाइक वी विल शो यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. फ्यूल टैंक का जो शेप है ओवरऑल उसे चेंज नहीं किया गया है. Nothing has changed in the engine department. आपको अभी भी एक 348.36 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक मोटर मिल रहा है which produces 15.5 kilowatts of power and 30 Newton meters of torque matched to a 5-speed gearbox. इस बाइक का जो curb weight है it is 179 kg, so it is decent to manage, and the saddle height is 800 millimeters along with 15 liters of fuel tank capacity. ओवरऑल इस बाइक की जो टॉर्की इंजन है आपको सिटी में चलाते समय काफ़ी पसंद आने वाली है. So I think that the CB350RS has a more young, more youthful appearance compared to the H'ness CB350. इस बाइक के फ्यूल टैंक पे आप देख लीजिए on this red colored option you have this CB350RS decaling. आपको ये metallic black accent फ्यूल टैंक पे देखने मिलेगा along with a white stripe. You have this new seat. Honda is calling it tuck and roll seat. Looks quite nice and feels quite good when you are on the saddle as well. लेकिन जब हम ये मोटरसाइकिल राइड रिव्यू के लिए लेके जाएंगे तभी ही हम इस सीट के कंफर्ट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे. साइड पैनल shows off the CB350RS branding. I really like the way this looks. I hate the H'ness CB350 branding on the other motorcycle. This looks more classy and more retro. इस बाइक का जो एग्जॉस्ट एंड कैन है पूरी तरीके से ब्लैक्ड आउट है, बट यू गेट अ क्रोम हीट शील्ड ऑन इट. Start to end can has been matte finished in black. Foot peg positioning on this motorcycle has changed. The CB350RS has a more rear set foot peg position, so you sit in a sporty way. And just check it out. इस बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है
It is still the same hydraulic shock absorbers over here. You can adjust them to your comfort. इस बाइक पे पीछे आपको 17 इंच का व्हील दिया गया है. The H'ness CB350 makes use of an 18-inch rear rim, but the swing arm is the same and the components are the same. So you have the same Nissin brake caliper along with a disc brake with Y pattern alloy wheels on this bike. The tire that you get on this motorcycle is a 150/70 setup, so it is wider than that of the H'ness CB350. There is also a very sleek looking under seat tail lamp. आपको पीछे पूरी तरीके से नई बनाई हुई एक LED tail lamp मिल जाती है along with these LED winkers. Of course you have hazard lamp functionality as well. आपको एक half chain cover दिया गया है with this motorcycle, and I really like the way this bike looks, and even this frame to mount both the foot pegs has been redesigned and it is in a darker shade on this particular motorcycle. Tire pressure information is hidden behind this panel over here, behind this mount over here, so you will have to really bend and look for it. And the good thing on this bike is that it comes with a toe gear shifter only. Heel and toe gear shifter यहाँ पे नहीं दिया गया है. I really like it. It is more convenient to use, and you can also open up this side panel making use of the key of this CB350RS. So in my books, I think that this bike looks nice. I think that less chrome over here on this motorcycle should attract a lot of younger buyers who want something more stealth, something more urban, something more up to date, and not a bike which is completely stuck in the past. Rear view mirrors जो हैं, you can notice they are the same circular type. यहाँ पे आपको chrome accents भी देखने मिलते हैं. The levers on this motorcycle are forged. आप यहाँ पे देख लीजिए. You do not get any kind of lever adjustment on this CB350RS, but nothing to complain about. इस बाइक के साथ आपको एक डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर क्लस्टर मिल जाता है which is similar to the H'ness CB350, and you have a lot of information which has been shared with you over here. जब आप बाइक शुरू कर देते हो इस तरीके से ये स्वाइप आपको दिखा देता है एक. इट जस्ट चेक्स ऑल दी सिस्टम्स. लेफ्ट हैंड साइड स्विच गियर पे आप देख सकते हो. यू डू नॉट गेट दोज एडिशनल कंट्रोल्स विच यू सी ऑन दी H'ness CB350 DLX Pro variant, and apart from that you get a hazard lamp switch on this motorcycle. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि Honda की H'ness CB350 it looks just like any other old school retro themed motorcycle, then you can consider this CB350RS. I would say that the design is more towards the scrambler side rather than an outright cafe racer. Now before I end this video, also have a look at this black and yellow paint option of this motorcycle, of this CB350RS, where RS stands for road sailing. Comments में आप हमें ज़रूर बताइए क्या लगता है आपको about this motorcycle. Do you think this is more good looking than the H'ness CB350? Will you buy this one over the H'ness CB350, or you would still walk in to the Royal Enfield showrooms when you want a motorcycle which looks like it has been designed and developed keeping in mind the old school charm?